All right, people. So, क्या हाल चाल है भाई जनता के? Today we have binomial expansion, and this is the first session for that. Okay. तो binomial expansion का पहला session just inaugurate कर रहे हैं भाई हम लोग, मगर if you put it up in that way. And this chapter, particularly for binomial theorem, I'll say, in the recent years in mains paper, the weightage has increased a little bit. Okay, because many of you can say that sir बहुत सारे slots हो रहे हैं, there are multiple timings are there, and that's why there is happening. Okay, that could be one of the reasons, but in spite of this fact, many of the papers you might also find like not just one question, you might find two questions as well. प्योरली एल्जेब्रा और उससे एसोसिएट फैक्टर्स के साथ कनेक्टेड है और हाईली लॉजिकल. कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फॉर्मूले हैं जो बिफोर हैंड आपको दिमाग में सेट होने चाहिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए स्मूथली रन करने में शो को. ठीक है. ओके. हेलो अर्नव, गुड आफ्टरनून. हेलो प्राची, गुड आफ्टरनून. तो शुरू करते हैं. शुरू किया जाए भाई. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. सो ये ड्रिल आपको पता ही है, मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो हेलो एकता, लाइक शेयर सब्सक्राइब. और आपको जो भी मतलब जो भी लोग नए हो चैनल पे वो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको जो भी नए वीडियोस हम अपलोड करें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो पूरा का पूरा आपके पास रहना चाहिए. देन यू सी विच वन यू विश टू वॉच. Okay, hello Fahim Sheikh. Sir, is this for droppers? Yes Fahim Sheikh, this is for droppers only. Okay, don't call them droppers, call them rankers. Okay, so it's not, there's nothing dropper or something. It's just that very few people have the courage to actually drop and then make a big move, something like that. Okay, so it's a courageous step. So for me, all of you are rankers only. Okay, sir, are you teaching in 45 days crash course? I am. I don't think I'm I'm part of that. No, Fahim, I'm not part of that. Okay, now, so let's focus on this binomial. As I said, any algebraic expression which composed of two dissimilar terms. For example, if you're writing 2a plus 3a, this is not a binomial term, right? But if you are writing 2a plus 3b, that will be a binomial term. Alright, so a plus b, a square minus b square, 2x plus 3y, these are all the binomial terms. Okay, Arnav, if you're asking this, when do you think the JEE main is, unless and until there is not a proper notification from our end, please do not believe anything. Okay, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं है तब तक रूमर्स में मत भागो. आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन जारी रखो और फोकस करो अपनी पढ़ाई पे. प्लीज डू नॉट फॉल फॉर एनी रूमर्स. ओके, स्ट्रैप में नहीं फंसना है. ओके. Perfect. Very nice. Very nice, Fahim. Very glad to hear that. IIT Bombay Civil is good. Perfect. Lovely. अच्छा, पास्कल्स ट्रायंगल जनता जानती है भाई, क्योंकि हम कोफिशिएंट को निकालने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू. पर प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है जब इंडेक्स बहुत हैवी हो जाए. फिर भी मैं आपको एक कनेक्टिविटी तो चेक करके बता ही दूंगा. तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल रूल बना देते हैं a प्लस बी टू द पावर n का. ठीक है, और उसमें पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं. देखो क्या हो रहा है. सी, a plus b to the power 0 equal to 1. We got only one coefficient क्योंकि एक ही टर्म में एक ही वैल्यू है. a plus b, right? We got two coefficient, rather two terms, है ना, 1 and 1. नेक्स्ट वाले में देखो क्या होगा, आप ऐड करोगे c, है ना. यहाँ पर देखो आपके दो 1 और 1 यहाँ से स्प्लिट हुए और बीच में देखो 2 1 और 1 के आए, ये दोनों क्लब हो जाएंगे और बीच का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 2. एंड दैट्स हाउ a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. एक और देखना है, फिर से देखो 1 और 1 वहाँ से निकले, फिर 2 2 दोनों तरफ स्प्लिट होगा 1 1 के साथ. 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3. एक्सपांशन कैसा दिखेगा, a प्लस बी दी होल क्यूब. सी द कोफिशिएंट 3 3 1 and 1, राइट. एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस. फिर आपको पावर 4 का एक्सपांशन मिलेगा, उसके कोफिशिएंट देखो क्या मिलते हैं. दिस इज 4c1 4c2 4c3. दिस इज 3c1 3c2, राइट. सी, this is 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 and so on, and that's how the binomial coefficients will keep on turning. Hello Twinkle, hello Aakash, hello Mr. Moinuddin Khan. JEE मेंस के लिए PYQ सफिशिएंट है. JEE मेंस के लिए मैं कह सकता हूँ कि PYQ सफिशिएंट है प्रोवाइडेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आपने सब ठीक से फोड़ लिए हो, तब फिर PYQ काफ़ी होते हैं. लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको जो अपने ओरिजिनल नोट्स है और थ्योरी था वो पूरा आपने कवर किया है. हेलो सपना. नाउ दिस इज अगेन, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, 6c1
6C2 15, 6C3 20, 6C4 15, 6C5 6 and like that, है ना? देखो कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहे हैं सब. ओके खैर आई थिंक इट्स गेटिंग ओवरशैडोड बाय मी. मैं आगे बढ़ता हूँ. पास्कल ट्रायंगल की जनता बड़ी बुरी तरह अच्छी तरह से कंफर्टेबल है. ओके हेलो देवानंदराज. वाओ लवली. फैक्टोरियल नोटेशन बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिकल डेफिनेशन होती है भाई कि फैक्टोरियल n लिखा है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5 so on till n. That's what my factorial n is. And we have defined factorial 0 always as 1. Okay, factorial n is equal to n into n minus 1 factorial, right, which is n into n minus 1 into n minus 2 factorial and so on. You can keep on writing like this only. Okay, सर स्कूल में बोर्ड का प्रैक्टिकल भी है एंड जेई के लिए पढ़ना भी है, क्या करें? प्रैक्टिकल बेटा इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, आपको भी पता है ये बात. उसको बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है. मेक श्योर कि बहुत फोकस्ड होके पढ़ो. मैं सिर्फ इतना कहूँगा जब भी कभी इस तरीके का प्रेशर बढ़ता है ना, तो आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास फोकस आपका ज़्यादा रहे. आप थोड़ी देर पढ़िए पर बहुत क्वालिटी स्टडी करिए. Okay, I do understand you people will be occupied. Of course, you will be occupied. You will feel sometime tired, and that's how it happens with every year with all the kids. Okay, it's not just that for the first time it is happening to you. It has happened to us. It will happen. It is happening to you, and it will happen to your juniors as well. Okay, the focus is जितना पढ़ो solid पढ़ो. ठीक है? Okay, नहीं कुछ लेट नहीं हुए प्रिया बेटा. It's all good. मिस्टर मातम चंदन कुमार, हर्षित जी आवाज कम आ रही है. हर्षित क्या ऐसा है क्या? Okay, sir, you made maths very easy. I am in new classes. Thank you, Aakash. And I'm sure that अगर ऐसा है तो तुम मतलब मैथ्स में मचा रखा होगा तुमने. ठीक है, अगर उस जस्ट के साथ पढ़ रहे हो. ओके सर, बाइनोमियल सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं बन पाते क्या? मैं तुरंत कराऊंगा, तुम उसका लोड मत लो. आज पहला सेशन है, बेसिक रहेगा, थोड़ा छोटे छोटे टाइप के कॉन्सेप्ट रहेंगे, पर तुम इसको फॉलो करो. आई एम टेलिंग यू. पर इसके अलावा ये करने के बाद ये सफिशिएंट नहीं है. इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस बहुत करना है. मैं तुम्हें एक पाथ दे दूंगा, ठीक है, एक जर्नी दे दूंगा. हर्षित मिश्रा जी, आपको आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सर आप बहुत क्या क्यों आवाज कम आ रही है तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा. आई थिंक इज देयर एनीवन, किसी और को क्या कोई इशू है क्या वॉल्यूम का? इज देयर एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी वॉल्यूम इशू या कुछ भी ऑडिबिलिटी का कोई इशू है क्या किसी को? प्लीज डू लेट मी नो. नो वॉइस इज फाइन. नो वॉइस. नो सर, नो सर, नो सर. हर्षित मेहता, चेक योर डिवाइस. नॉट मेहता, सॉरी, हर्षित मिश्रा, प्लीज चेक योर डिवाइस. माय बैड. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. फॉर्मुलाज फॉर कॉम्बिनेशन. नाउ दीज आर वेरी बेसिक फॉर्मुला. NC0, NC0, NC1, NC2, जनरल NCR. What is NCR? Number of ways of selecting R different things out of N different things. Lovely. ठीक है. मैथमेटिकल डेफिनेशन, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r into फैक्टोरियल n minus r. ओके, NC0 1, NC1 n, NCn 1. ओके, फिर NCR इक्वल टू NCn minus r. और एक और बहुत पॉपुलर एंटिटी ये वाला. सी दिस वन इज हाईली इंपॉर्टेंट. NCR इक्वल टू NCS. तो इसमें सिर्फ दो रिजल्ट होते हैं, नॉट जस्ट R इक्वल टू S. N इज इक्वल टू R प्लस S. ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, ओके चलो चलते हैं आगे. नाउ लेट्स क्विकली सी NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR. वेरी वेरी पॉपुलर रिजल्ट. मैं एक क्वेश्चन शुरुआती से करूंगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आप कई जगह इस्तेमाल करेंगे. इंटीग्रेशन में भी करते ही हैं, है ना, और बाइनोमियल के एक्सपेंशन में ये कुछ जगह पे आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कुछ जगह पे आप मतलब एक्सपेंशंस को स्मूथ करने के लिए, इजी बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल करेंगे. उन सब जगह पे ये टेक्निक या ये जो आइडेंटिटी है बहुत बहुत काम आती है. ठीक है, ओके ऑलराइट. तो NCR इक्वल टू N by R into N minus 1 CR minus 1. अगेन द सेम थिंग, है ना, जहाँ पे मल्टीपल बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा सिग्मा वाले जो नोटेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे. वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ लॉट ओवर हियर. ये जो तीन दिख रहे हैं ना आपको, इन तीनों का. ठीक है, NCR इज नथिंग बट n into n minus 1 into n minus 2 so on till n minus r plus 1 upon n minus r factorial. ओके, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जनता जानती है. मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ. ठीक है, आप रिपीटर थे तो मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक फॉर्मूले वगैरह सब आपको पता है, इसलिए मैंने फॉर्मूले सारे दिखा दिए इस पेज पे, तो आपको जो भी देखना हो आप आराम से देख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 0 to 20, 50 minus r C6 इज इक्वल टू. अब देखो ऐसे सारे क्वेश्चन में ऑप्शन देख लो. सिग्मा है, ऐड करना है, बहुत सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड हो रहे हैं. हेलो पर नमस्ते बेटा. हेलो निधि. ओके ऑलराइट. तो हो क्या रहा है देखो. अच्छा पहले
ऑप्शन में देखिए अगर हम, तो देखो यहाँ पे -30C7 +30C7 -30C7 30C6, ये 30C7, सी यहाँ तो एडिशन है और सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ ऐड हो रहा है, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। तो जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारे के वाले, ये सबके सब हमारे पॉजिटिव वैल्यूज के साथ हैं, सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव कैसे हो रही है? ऑप्शन में मुझे माइनस साइन कहाँ से दिख रहा है? मतलब क्या हो रहा होगा? शायद कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया हो ताकि चीजें आसान बन जाए मेरे लिए, है ना। तो अब एक बार लिख करके देखो, चलो शुरू करते हैं कैलकुलेशन। ओके, पहले मैं सिग्मा को लिखने की कोशिश करता हूं। तो सिग्मा r इक्वल टू 0 to 20, वी गेट दिस एज 50 minus rc6. If I put r equal to 0, this is nothing but actually 50c6 plus 49c6 plus 48c6 and so on. जब r को आप 2 पुट करोगे तो this will become actually ओके फाइन। तो हम लोग r को जो हम लोग 20 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 30c6, तो यानी 31c6 आएगा उसके पहले, फिर यहाँ 30c6 आएगा, दैट्स इट। ऐसा कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन में ये दिख रहा है कि कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ तो सब ऐड होता हुआ दिख रहा है, मतलब कुछ हमने अपनी जेब से लगाया होगा। अब देखो होता क्या है इन सारे केसेस में, सोचोगे कैसे, हाउ द थॉट प्रोसेस इज टू बी लिंक्ड। ओके, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी लॉजिकल स्टेप। द आइडिया सेज दैट you check what kind of pattern I'm dealing with. My upper index is changing 50, 49, 48, 31, 30. Lower index remains the same 6, 6, 6, 6 everywhere. तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जिसमें हम लोग ऐड वैड करें और अपर इंडेक्स या तो एक से बढ़ जाए या घट जाए? कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या? वेरी फेमस प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। एक अपर इंडेक्स एक से बढ़ गया, लोअर इंडेक्स में जो बड़ा वाला था वो लिया हमने, ठीक है। ओके, प्रिया श्रीवास्तव जी, सर मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मैंने चैनल से पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा मैथ्स स्ट्रांग हो रहा है, एंड थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्लैड प्रिया बेटा। आई बिलीव मी, मतलब इस तरीके की बातें हमारे हौसले को तो बढ़ाती हैं और बहुत खुशी देती है, और हमारे इस कॉज को जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, तो हम ग्लैड। और अभी भी किसी को भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही तो हमें बता जरूर दिया करो, ताकि हम एटलीस्ट उनसे कनेक्ट बैठा पाए एंड वी आर एबल टू रीच टू यू, ठीक है। वी आर एबल टू सॉर्ट प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट। ओके, एनीवे लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे ऊपर दोनों सेम चाहिए, तो आखिरी वाले देखो जोड़ना शुरू करूं मैं, तो घटा तो सकता नहीं हूं, बढ़ने से स्टार्ट करना होगा। 36 है, -30C7 दिख रहा था, मतलब शायद अगर मैं यहाँ एक 30C7 ऐड करूं और 30C7 सब्ट्रैक्ट करूं, भाई जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, सो इफेक्टिवली आई हैव एडेड 0, एंड किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे कोई हार्म नहीं है, वैल्यू बदलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, है ना। ओके, तो शुरू करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। तो 30C7 प्लस 30C6 प्रॉपर्टी देखो, अपर इंडेक्स एक से बढ़ जाएगा तो 30 किस पे पहुंचेगा? 31, और इन दोनों में से जो बड़ा वाला वो ले लेंगे हम लोग। सो वी विल बी रीचिंग टू 50C6 प्लस 49C6 एंड सो ऑन टिल 31C6 प्लस 31C7 माइनस ऑफ 30C7। डिड यू गेट दैट? अब देखो फिर से वही चीज आ गई, देखो अपर इंडेक्स सेम है, लोअर इंडेक्स में देखो एक का डिफरेंस है, तो क्या होगा? फिर से आप यही वाला थ्योरम लगाइए, दोनों को ऐड करिए, तो जब इनको ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 50C6 प्लस 49C6 एंड सो ऑन, दिस विल बिकम एक्चुअली 32C7 माइनस ऑफ 30C7। ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना, पीछे वाली वैल्यू के साथ जुड़ता चला जाएगा। लास्ट में देखो क्या होगा, 50C6 आएगा, 49C6 के पहले आ जाएगा आपका, इनफैक्ट 50C6 के बाद आपके पास पहुंचेगा 50C7 माइनस 30C7 एज इट इज, वो तो एज इट इज कंटिन्यू हो रहा है। अब फिर से एक बार आखिरी बार लगाइए इसमें NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, तो 50 अपर इंडेक्स है, एक से बढ़ जाएगा 50, तो दैट विल बिकम 51, और दोनों में से जो बड़ा वाला है 6 और 7 में कौन सा बड़ा है? 7, सो 51C7 माइनस 30C7, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी माय A ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। What was the first step? I started using the formula from left to right. See, left to right यूज करने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी बेटा, तुम्हें डिफरेंस फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा। तुम यहाँ पर लिखोगे कि N प्लस 1 CR माइनस NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, तो वो फॉर्मेट सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वाले टर्म से स्टार्ट किया है बेटा, तो फर्क कुछ नहीं है उनमें, दोनों अपनी जगह एकदम ठीक है अर्नब। Okay, so Arnav, there is no difference at all, believe me. It's just that the approach has been done in that way, that I'm starting from the last one because it's easier to collate them. All right? Okay. Perfect. So I hope Arnav, your doubt is clear and you are sorted with it. Sure? चले आगे? Okay. So A option become the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Binomial theorem का statement दे देता हूँ मैं.
तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल साफ सुथरा है भाई कि अगर n नेचुरल नंबर है, सो द फर्स्ट लेक्चर, ओके, इन द फर्स्ट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द अपर इंडेक्स n इज अ नेचुरल नंबर. When it becomes a fraction or a negative integer or something, that we'll do quite in the later stage, not now. When n is a natural number, we open up this expansion, it goes up to for in total these n plus 1 terms. मतलब अपर इंडेक्स अगर n है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे हैं? n plus 1. ठीक है, चलो जनरल टर्म ncr into a to the power n minus r into b to the power r. These are all basic formulas, no need to worry. As I said, number of terms are n plus 1. Binomial coefficients are nc0, nc1, nc2, so on till ncn. That's it. ठीक है? Index of a decreases from n to 0. Index of b increases from 0 to n. Right? And in any term, the sum of indices of a and b is n. You remember the general term? ncr. Yes. So let me just remove this. हट जाओ भाई. Okay. So this is ncr a to the power n minus r into b to the power r. Right? That was the general term that we were talking about. tr plus 1. है ना? Okay, okay. चलो. तो as I said, ncr equal to ncn minus r. सबसे पॉपुलर है. ठीक है? Now, ये एक और सा बड़ा अच्छा रिजल्ट है. सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आई एम श्योर दैट कि आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट. Kth term from the end is equal to n minus k plus 2th term from the beginning. ठीक है? Understood? Kth term from the end is equal to n minus k plus 2th term from the beginning. है ना? मान लो अगर मैंने n को, अगर जैसे मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, n 6 ले तो टोटल 7 टर्म होंगे ना बेटा, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7. Let's say if I want to go for third term from the end. So third term from n is equal to n, which is 6, minus 3 plus 2th term from the beginning. 2th term from begin. So 6 minus 3 is 3, 3 plus 2, 5th. See, this is the third term from the beginning. Got it? Okay? Perfect? Lovely. चलो आगे बढ़ते हैं. जनरल टर्म की बात कर रहे थे भाई, तो tr plus 1 क्या देता है? tr plus 1 देता है ncr into a to the power n minus r into b to the power r. जनता सॉर्टेड. बेसिक फॉर्मूले सब मैंने दिखा दिए हैं. अब मैं क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब भी उतनी अच्छी रफ्तार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है? पेन पेपर रेडी रखिए, हैंडी रखिए. कैलकुलेशन बहुत स्विफ्ट रहना चाहिए और एरर 0 रखनी है. बस वही कमिटमेंट चाहिए मुझे तुम्हारा कि आपकी तरफ से कैलकुलेशन में कोई भी एरर ना होने पाए. जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें, व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर इट, देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ एरर इनटू इट. ऑलराइट, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाली बात करते हैं. If the coefficient of x to the power 10, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को थोड़ा हैवी रखा है, जानबूझ के. ठीक है? पहला या दूसरा क्वेश्चन है सेशन का, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट अ लिटिल हैवी. कुछ पुराने कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पहले से पढ़ रखे हैं उनको याद दिलाएंगे भाई. इट्स अ रैंकर्स बैच, राइट? तो आपने सब पढ़ रखा है, तो कुछ चीजें जो याद नहीं आएंगी उनको याद करने की कोशिश करो. ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो. हम क्वेश्चन देखते हैं. क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर थॉट प्रोसेस? क्या पार्ट है? जो पार्ट क्लियर नहीं वो बोलो पहले एक बार. क्या क्लियर नहीं हो रहा है? मैं तो अभी तक से बेसिक बताया है हर्षित, बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं. ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in the binomial of root x upon 5 to the power 1 by 4 plus root 5 upon x to the power 1 by 3 raised to the power 60 is 5 raised to k into l. मतलब वो जो टर्म बन के आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 इस एक्सपेंशन में, उसकी वैल्यू है 5 to the power k into some value l, जहां k और l दोनों नेचुरल नंबर हैं और l इज को प्राइम टू 5. मतलब l में 5 का कोई फैक्टर नहीं है. को प्राइम का मतलब क्या होता है? HCF 1 हो जाए. जैसे 4 and 9 आर क्या है? दीज आर को प्राइम. व्हाई दीज आर को प्राइम? बिकॉज 4 और 9 का HCF कितना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1. अभी ठीक है? अभी क्लियर है? ओके, थ्योरी प्रोसेस करने में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए हर्षित, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं. इनमें कुछ देखो, एक्सपेंशन को लिखने का तरीका आप ऐसे समझो. अच्छा हर्षित, मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बता दोगे. मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब, आप बता दोगे. मैं आपसे पूछूं a प्लस बी टू द पावर 4, आप थोड़ा जुगाड़ उगाड़ करके बता दोगे. अब मैं तुरंत आपसे पूछूं मुझे a प्लस बी टू द पावर 27 बताओ, तो क्या करोगे? तो थोड़ा सा बैकफुट पे आओगे ना. तो कोई एक्सपेंशन फॉर्मूला चाहिए होगा ना, है ना? वो सब तो याद होते हैं फॉर्मूला की तरह, पर a प्लस बी टू द पावर 2019 क्या करोगे? बाइनोमियल की शरण में जाएंगे हम लोग. बोलेंगे बाइनोमियल, हमने अपना जीवन आपको समर्पित किया, आपके स्टेटमेंट को हमने सत्य माना है, और नाउ वी आर गोइंग टू स्मूथली रन इन द शो.
ऑलराइट, ओके। तो बस एक्सपांशन, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ऑब्जर्वेशन, उन सबको स्मूथली अब्सॉर्ब करके आगे चलो। चलो अब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं। तो उसने कहा कि जो टर्म विच इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 है, दैट इज 5 टू द पावर k इंटू एल बन के आता है, जहां में l इज एक्चुअली कोप्राइम विद 5, यानी l में 5 का कोई एलिमेंट नहीं है, तो k की वैल्यू बताओ। यानी बेसिकली x टू द पावर 10 में 5 की टोटल कितनी पावर आएगी वो चाहिए मुझे, बस। शुरू करते हैं क्वेश्चन। This is what my expansion is. So let me quickly write that. This is actually x to the power half. Okay, so this is, I'm writing it here, x to the power half into 5 to the power minus 1 by 4 plus 5 to the power half into x to the power minus 1 by 3 to the power 60. Now when I try to write the general term for this one, okay, let me quickly write the general term for this, tr plus 1, that will be 60 cr, this is 6, 0 बड़ा छोटा हो जा रहा है, 60 cr into x to the power 1 by 2, 5 to the power minus 1 by 4 to the power 60 minus r into 5 to the power half into x to the power minus 1 by 3 to the power r. Now let's club these terms, है ना, सबको क्लब करते हैं, अरेंज करते हैं। सपना का आंसर आ रहा है 15। थोड़ा केयरफुल रहना सपना, ठीक है। एवरीवन प्लीज बी वेरी विजिलेंट, आई एम टोल्ड यू। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को दो कॉन्सेप्ट के साथ मिला के बनाया। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Okay, so when I rearrange that tr plus 1, that's going to be 60 cr. If I club the powers of x, that will become x to the power 30 minus r by 2 minus r by 3 into 5 to the power, this will become actually 5 to the power minus 1 by 4 वाला factor आएगा, ये 60 है यहाँ पर. So this will become actually 5 to the power 60 r by 4. So यहाँ से 5 to the power r by 2. Okay, so let's club it up in that way only. हम वैसे बनाते हैं. So 5 to the power minus of 60 by 4, which is minus 15 plus r by 4 into 5 to the power r by 2. Okay, alright, is this sorted? अब 5 की पावर को क्लब कर लेते हैं, x की पावर को क्लब करते हैं. तो मुझसे क्या कहा गया? कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10. So what is the exponent of x? So I want this particular term to become x to the power 10 actually. तो मैं क्या करता हूँ? एक्सपोनेंट को इक्वेट करता हूँ. So 30 minus r by 2 minus r by 3 is equal to 10. 10 को उधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं. So we'll get this 30 minus 10 is equal to r by 2 plus r by 3, which implies that 20 is equal to 5r by 6. ये 4 इधर जाएगा, 4 6 into 4, which implies that r becomes equal to 24. Lovely. r तो 24 आ गया भाई, ठीक बात है. जब r 24 आ गया तो मुझे अब 5 की पावर वाले टर्म को सबको उठा करके फिट करना होगा. ठीक है, शुरू करते हैं. उसमें क्या है, जो है वो बन के आएगा. इतना थोड़ी ना सोचना है हमको. तो मैंने क्या किया, मैं इस टर्म को अगले वाले तक ले जाता हूं. मेरे पास जो जनरल टर्म था tr plus 1, that I will write once again, which is actually 60 cr x to the power 30 minus r by 2 minus r by 3 into 5 to the power minus 15 plus r by 4 and minus r by 3. ठीक है, sorry, plus not r by 3, it's actually r by 2, not r by 3. Let me just quickly check that. Yes, it is r by 2. ठीक है, अब as I said, what was r? 24, right? When I'm talking about coefficient of x to the power 10. चलो r को 24 पुट कर देते हैं. तो यहां से मुझे मिला 60 c24 x to the power 10 5 to the power. मैं r को 24 पुट कर रहा हूं, तो 24 by, so it becomes minus 15 plus 24 by 4 minus 24 by 2. तो यहां से मुझे मिला minus 12. This is actually 6. So I'll be getting this as minus 12 minus 15, that is minus 27. Minus 27 plus 6. This is going to be power by 4 and all. ये सब भी बना रहा था भाई, तो कहाँ गया मेरा ये? r by 4, 24, 26, 15, r to the power 6. Okay, चलो बनाते हैं हम लोग. क्या हो रहा है ये थ्योरी? अच्छा, ओके. तो मुझे यहाँ से मिलके आ गया है 5 to the power 60 minus r by 4. So minus 15 5 to the power. ठीक है, वो तो ठीक बन के आ ही रहा है भाई. और यहाँ 5 to the power r by 2 है, that is 5 to the power 12. और ये विद प्लस साइन है, दिस इज प्लस. सो 5 6 18. तो इफेक्टिवली कोफिशिएंट बन के आया 60 c24 5 to the power 3 into x to the power 10. अब देखो सवाल, कोफिशिएंट क्या है इसमें? कोफिशिएंट क्या है? सिर्फ कोफिशिएंट की बात करो.
कोफिशिएंट है 60c24 इंटू 5 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर k इंटू एल। क्या यहां से मैं k की वैल्यू 3 लिख दूं? क्राइम हो जाएगा यार, क्राइम हो जाएगा। बताओ मुझे 60c24 में भी तो कुछ 5 की टर्म्स होंगे, वो भी तो क्लब करो, तब तो बन के आएगा ना मेरा k। मुझे l से मतलब नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ k निकालो। तो मतलब क्या है, मतलब क्या है कि मुझे 60c24 में अलग से ढूंढना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। ओके, तो मैं इस स्टेटमेंट को अपने लिए हैंडी रखता हूं और अगले पेज पे जा रहा हूं। तो मेरे पास क्या आया था 50, नॉट 50, माय बैड, दिस इज एक्चुअली 60c24। सो वी गेट दिस 60c24 5 to the power 3 is equal to 5 to the power k into l। अब मैं 60c24 को थोड़ा सा ठीक ठाक करता हूं। हेलो हेलो राज। 60c24 वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 36। ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है सर, कहां से 5 की पावर निकालेंगे? बेटा मैंने कहा था ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा है जानबूझ के, क्योंकि मुझे दो कॉन्सेप्ट मिलाने थे। पीएनसी का वो कॉन्सेप्ट याद करो जहां पे आप किसी फैक्टोरियल एन में व्हाट इज द एक्सपोनेंट, मैं याद दिलाता हूं, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम नंबर p in the expansion of factorial n. What is the exponent of the prime number p in the expansion of factorial n? That becomes is equal to n by p its GIF plus n by p square its GIF plus n by p cube its GIF, and the process keeps on going like this till whatever, जब तक भी till the time we keep getting a natural number. ओके ऑलराइट। तो सर यहाँ तो फैक्टोरियल 60 भी दिख रहा है, फैक्टोरियल 24 भी दिख रहा है, फैक्टोरियल 36 भी दिख रहा है, वो कैसे पता लगाएंगे? पेन चलाओ भाई, पेन चलाओ। लेट्स टॉक अबाउट फैक्टोरियल 60। सो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द फैक्टोरियल 60? कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस? आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 60 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया भाई, इसको नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, दिल छोटा नहीं करते हैं। कितने थे भाई हम लोग, इतने थे यहाँ पे। तो यहां हम लोग पहुंच गए थे एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन, आ जाओ बालक, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 60, व्हाट दैट वुड बी, दैट वुड बिकम एक्चुअली 60 अपॉन 5 इट्स GIF प्लस 60 अपॉन 5 स्क्वायर GIF प्लस 60 अपॉन 5 क्यूब GIF। उसके आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगी, बाकी सब तो जीरो ही हो जाएंगे, है ना। ओके, जनता को याद आया जब भी धड़ाधड़ यस सर या सब बन के आ गया। सो इट बिकम्स नथिंग बट इज इक्वल टू व्हाट, ये बन के आता है, देखो आगे एंड सो ऑन इट विल गो लाइक दिस, दिस इज एक्चुअली 12 प्लस 2 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो बेसिकली एक्सपोनेंट क्या आ गया 14। फैक्टोरियल 60 में एक्सपोनेंट क्या आया 14। ओके, नाउ गाइस गिव इट टू मी इन द नेक्स्ट वन। किधर गया? आई एम लुकिंग फॉर एक्सपोनेंट ऑफ 5 in factorial 36. What that would be? 36 by 5 GIF plus 36 by 5 square GIF plus 36 by 5 cube GIF and so on, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। So 5 7 35 7 plus 1 and 0, so basically 8। कितना आ गया एक्सपोनेंट? फैक्टोरियल 36 में एक्सपोनेंट कितना आया 8। वाओ लवली, सपना ने लिख दिया भाई 1448, बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे, वेरी ग्लैड। इसीलिए फैक्टोरियल 4 में जब कैलकुलेट करोगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी 24 by 5 प्लस GIF ऑफ 24 by 5 स्क्वायर, दैट्स इट, यहीं पर ही जीरो हो जाएगा वो। तो द वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 5 4 प्लस 0 व्हिच इज एक्चुअली 4। तो देखो हुआ क्या, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 36, आई एम टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 60 में फैक्टोरियल 5 टू द पावर 12, सॉरी 14, नॉट 12, 14। डिनोमिनेटर 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 8। इफेक्टिवली न्यूमरेटर में इस पूरे टर्म में 5 टू द पावर क्या मिल रही है 2। करेक्ट। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 60c24। What is the exponent of 5 involved in it? 5 square. What was earlier there? Coefficient क्या था? 60c24 into 5 to the power 3. That is equal to an exponent of 5. It will be sum L into 5 to the power 2 into 5 to the power 3. Right? So 5 to the power 2 into 5 to the power 3. That will become is equal to what? L into 5 to the power 5. इसको हम compare करें L into 5 to the power K से. What is the value for K? K becomes equal to 5. थासु question.
एकदम टिपिकल जेई मेन क्वेश्चन है, जेई मेन या एडवांस का इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है, देख लो आराम से। मैंने क्या यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ पीएनसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, कहने को बाइनोमियल का क्वेश्चन है पर लगा कह रहा हूं बहुत देर से तो मैं पीएनसी यूज कर रहा हूं, सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आंसर क्या बन के आ गया, k = 5। आई एम ग्लैड दैट पीपल मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जनता जिनको नहीं आया था, आज के बाद याद रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका दिल ना छोटा होने पाए। ठीक है, चलो 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 अगला। इसमें बहुत सारे लोग गलती वही करते हैं कि वो k को 3 रिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि उनको शुरुआत में 5 क्यूब दिखता है, इसलिए 60C24 में भी तो 5 एक्सपोनेंट होगा ना भाई, वही ढूंढना ही तो काम है, इसे तो क्वेश्चन दिया है उसने। अगला क्वेश्चन, चलो। Let the coefficient of x raised to -1 and x raised to -3 in the expansion are m and n respectively if r is a positive number such that integer, that to particularly positive integer and natural number, such that m into n square is equal to 15cr into 2 to the power r, then the value of r is। चलो पहले कलेक्ट करते हैं। एक्सपांशन को जनरल टर्म लिखो भाई, क्योंकि इन सब में अगर आपको जब भी कभी कोफिशिएंट लिखने होता है आपको जनरल टर्म तो लिखना है, तो पहले जनरल टर्म लिखते हैं। सो tr+1 for this expansion will become 2 into x to the power 1 by 5 raised to the power 15 minus r, and of course I'll have 15cr also, my bad, so I should write that first. So it will be 15cr into 2x to the 2x power 1 by 5 to the power 15 minus r into x to the power -1 by 5 to the power r. Let's rearrange, है ना, इस टर्म को rearrange करते हैं। So we are getting this as 15cr into 2 to the power 15 minus r, x to the power, so we get 15 by 5, that is actually 3 minus r by 5 and minus r by 5. Okay, तो बेसिकली मुझे मिल क्या रहा है, मुझे जनरल टर्म मिल गया है tr+1 is equal to 15, किधर गया भाई, 15cr 2 to the power 15 minus r into x to the power 3 minus 2r by 5। मुझे क्या क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -1 x पावर -3, तो m क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लुकिंग फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1, उसको वो m बुला रहे हैं। सो m बिकम इज इक्वल टू x टू द पावर -1 के लिए क्या होना होगा, इनफैक्ट पहले मैं वो पावर 1 करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -1 दैट इज 3 minus 2r by 5 इक्वल टू -1, which implies 2r by 5 equal to 4, यानी कि r equal to 10. So when r equal to 10, the value for m will become is equal to 15c10 2 to the power 15 minus n, that is actually 2 to the power 5. Okay, so m turns out to be 15c10 into 2 to the power 5. Is that okay? Alright, चलो बढ़िया है। n की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, अब n भी तो कैलकुलेट करना है, तो for n we are basically looking for coefficient of x to the power -3, that is you will be making 3 minus 2r by 5, that exponent of x is equal to -3. You take it on that side, that gives you 6 is equal to 2r by 5, which implies we get this r equal to 15. When r equal to 15, my n will become is equal to 15c15 2 to the power 15 minus 15. Okay. तो n basically क्या बन के आ गया, 1. Okay. Now what are they asking for? m into n square is equal to 15cr into 2 to the power r. लिखते हैं भाई फटाफट, क्या वैल्यू था m का, जनता m का वैल्यू क्या था, so m into n square, m was actually nothing but 15c10 into 2 to the power 5 is equal to 15cr into 2 to the power r. r कंपेयर करना है तो 2 की पावर को सेम बनाना होगा, अब तक समझ में आ गया होगा भाई जब तक, हाँ बहुत बढ़िया, r equal to 5, वेरी नाइस। तो यहाँ से जनता को मिलना शुरू हो गया, दीपांशु चौहान जी हेलो बेटा। सो 15c10 को और क्या लिख सकते हो, 15c5 भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 2 to the power 5 दिख रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 15c5 into 2 to the power 5। इसको जब कंपेयर करोगे r की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, 5। बहुत बढ़िया, दिस इज द आंसर। ठीक है, गुड जॉब सपना, वेरी ग्लैड दैट यू रीच्ड द आंसर करेक्टली, वेरी नाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ, आगे चले। इसमें कैलकुलेशन है बेटा, इस अलजेब्रा के पार्ट में दिमाग इसीलिए ज्यादा लगता है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में भाई साहब कहीं पे ना तो आपको पेशेंस छोड़ना है, नहीं अपना कहीं पे कंसंट्रेशन मूव थोड़ा सा भी लूज करना है। ठीक है, सो यू हैव टू बी हाईली पेशेंट एज वेल एज हाईली फोकस्ड। ऑल राइट, लवली, हाँ ठीक बात है भाई मिस्टर
Copium Danger has written that correctly. Yes, this is exactly what I was looking for. You went very fast while solving, sir. I'm sorry. You feel that way? Okay. लिख देता हूं मैं फिर से. देखो जनरल टर्म, ये रहा मेरा जनरल टर्म. x की पावर क्या रही? 3 माइनस 2r बाई 5. एक बार 3r माइनस 2 बाई 5 को 3 माइनस 2r बाई 5 को आपको माइनस 1 करना होगा, और x टू द पावर माइनस 3 के लिए 3 माइनस 2r बाई 5 को आपको माइनस 3 करना होगा. दोनों से अलग अलग r की वैल्यू आएंगी, उनको पुट कर दीजिए. उन दोनों से m और n की वैल्यू आएगी जो मैंने निकाली है यहाँ पर. ठीक है, आराम से रिवाइज करके दोबारा देख लेना, रिकैप करके रिवाइंड करके. ओके, स्मूथ चलने की कोशिश करो. अर्नव, आई होप अभी क्लियर है. चलो बढ़िया. आई नो कि मैं कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा फास्ट रहता हूँ, या मतलब फास्ट हो गया होगा, मुझे नहीं पता. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बट आई विल से दैट द कंसंट्रेशन इतना भी नहीं इधर से उधर जाना चाहिए, वो नहीं चाहिए मुझे. ठीक है, उसमें तुम्हें पिक करना है. यू हैव टू पिक इट अप एवरीथिंग. यू हैव टू एंश्योर दैट एवरीथिंग स्मूथली फ्लोज. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. बड़ी बात कर ली. The coefficient of x to the power 18 in the product 1 plus x into 1 minus x to the power 10 into 1 plus x square to the power 9. सर पहले सेशन में आप ये तीन टर्म वाला एक्सपेंशन लेके आते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? क्या कोई बताएगा हम इसको कुछ एडजस्ट कर सकते हैं जिससे जल्दी आंसर आ जाए? Is there any way I can do that? Public, please quickly tell me. Is there a way I can do that? कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कर दें, या फिर ये जो मल्टीनॉमियल एक्सपेंशन होता है जो हम आखिरी सेशन में पढ़ेंगे उसको एडजस्ट करें? राज, यस सर. क्या बोलो, लिखो, लिख के दो मुझे. क्या एडजस्टमेंट करोगे बताओ? ये 3 नंबर का एक्सपेंशन थोड़ी ना लिखता फिरूंगा मैं, छोटा तो करना है. वी हैव टू मेक इट शॉर्टन. हाउ एम आई गोना मेक इट शॉर्टन? 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 10. तो मैंने से एक 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 अलग किया, 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 को अलग किया. क्यों? क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले के पार्ट हैं भाई, मेरी कोई गलती नहीं है. क्लब कर दो उन दोनों को. यस सर, 1 माइनस एक्स को अलग कर दो. एकदम सही बात है बेटा. सो द फर्स्ट 2 टर्म विल गेट क्लब्ड एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. द अदर 2 टर्म विल गेट क्लब्ड एज 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 9. एक्चुअली दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक. आई होप अब समझ में आ गया होगा कि क्या बन रहा है भाई. सो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला. सिंपल, एज सिंपल एज इट साउंड्स. ठीक है, अच्छा ओके. ये क्या हो गया भाई? राज जी बोल रहे हैं कि गलती है सर. सुहाना, हेलो सुहाना बेटा, क्या लिखना चाह रहे हो भाई राज? ओके, एनीवेज शुरू करते हैं. चलो अच्छा, हम लोग कैलकुलेशन की बात मैं कर रहा था, तो विल बी पुटिंग दैट एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्यों इसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना है यार? वी आर लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 18, राइट? सो लेट्स सिंपल प्रोडक्ट है, so that we are trying to look for coefficient of x power 18 in this expansion, right? So that will be equivalent to, right, we are looking for coefficient of x to the power 18 in 1 minus x cube to the power 9 minus x square times of 1 minus x cube to the power 9. Alright, यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरीवन, दिस इज कंफर्टेबल? 1 माइनस एक्स क्यूब कैसे आया सर? बेटा ये एक्सपेंशन देखो ना, a माइनस बी, दिस वन. बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है यार, उसमें मैं क्या लिखा हूं तुमको, उसमें कुछ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है. दिस इज एक्चुअली 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. क्या बात है, बस वही किया है मैंने और कुछ नहीं किया है. ओके ओके मिस्टर कोपियम डेंजर जी, चलो बढ़िया. नाउ लुक फॉर दिस थिंग. अब देखो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आप इंस्टेंटली बना सकते हो. He's asking for coefficient of x to the power 18. तो यहां तो ठीक है भाई, x to the power 3 है, उसकी पावर 9 है, so we'll get all the terms of x to the power 3 only. यहां पर we'll get from this expansion we'll get all the terms of rather x to the power 3 के फॉर्मेट, राइट? और यहां पर भी सबके सब x to the power 3 के फॉर्मेट मिलेंगे, पर उस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर के x to the power 6, मुझे 18 चाहिए, वो कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से, मुझे यहां से फ्रॉम दिस टर्म आई नीड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18, और अगर इस पूरे से मुझे x टू द पावर 18 चाहिए, राइट, इफ आई एम लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 18, तो अगर x स्क्वायर यहां पर है, यानी बेसिकली फ्रॉम दिस आई विल बी लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 16. वो तो मिलेगा ही नहीं यार. क्यों? क्योंकि इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखो, छुटकू वाले को,
You're trying to search for coefficient of x to the power 16 in 1 minus x cubed to the power 9, which can give me only terms with coefficient of, rather, which will give me only x to the power 3k format. Multiples of 3. X to the power 3, x to the power 6, x to the power 9, 12, 15, 18 and so on. 16 कब देगा? कभी नहीं देगा. So what is the coefficient of x to the power 16 from this expansion? 0. मतलब उससे कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे. ठीक है? Okay, all right, good. So सर मैं सॉल्व कर रही थी. Okay, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. Harshal Kumawat, hello Harshal. All right. So as I said, this particular term, right, we have to do nothing. अब जब लाइफ इतनी इजी हो जाए ना मैथ्स में, तो अपने आप को लकी माना करो और खटाखट बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करो. सो इन दिस एक्सपेंशन आई एम लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 18. So what exactly my question became? My question became that effectively I have to look for coefficient of x to the power 18 in the expansion of 1 minus x to the power 3 to the power 9. What is the general term for this one? 9CR x. Okay, so minus 1 to the power r into x to the power 3r. I want this 3r to become equal to 18, which implies that r equal to 6. When r equal to 6, what is the coefficient? The coefficient will become what? 9c6 into minus 1 to the power 6. Calculation karte hain. So this is actually 987 upon 3 to 1. So we get this 3, 3s are there 4. So we get this as, therefore, what is it? 84. Perfect. That's what my answer is. Kya mila? 84. अरे वाह, जनता ने आंसर देना शुरू कर दिया. बहुत बढ़िया सुहाना, शाबाश, वेरी गुड. सपना ने भी आंसर दे दिया. वेरी वेरी नाइस. ग्लैड, वेरी ग्लैड. गुड जॉब सुहाना, गुड जॉब सपना. वेरी ग्लैड दैट यू पीपल आर क्विकली रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलूं. अगला क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा डेटा के एडजस्टमेंट का गेम है ना. फोकस रखना अपना, कैलकुलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए. ओके, all right. So question लिखो. The ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the binomial expansion 2 to the power 1 by 3 plus 1 upon 2 into 3 to the power 1 by 3 raised to the power 10 is. चलिए शुरू करते हैं. तो the ratio of the fifth term from the beginning, आपको fifth term लिखना है तो that should not be a trouble, है ना. पहले मैं tr plus 1 लिख देता हूँ. So tr plus 1 will become actually 10cr into 2 to the power 1 by 3 raised to the power 10 minus r into 2 to the power 1 upon, so 2 to the power minus r into 3 to the power minus r by 3. Okay, so this is a general term. वो बोल रहा है the ratio of the fifth term to the beginning to the fifth term from the end. Okay, तो मैं कलर चेंज करता हूँ. Now, so t fifth from the beginning, ठीक है. I'm just writing it again. Fifth term from the beginning, fifth term from the beginning. So T5, that will become actually T4 plus 1, and that will become is equal to 10C4, 2 to the power 10 minus 4, which is 6 by 3, it's actually 2 square, into 2 to the power, r is minus 4, and into 3 to the power minus 4 by 3. This is what my T5 from the beginning. Okay. Let's go for the fifth term from the end. So fifth term from end is equal to, n कितना है? 10. So 10 minus 5 plus 2th term from beginning, which is 5 plus 2, that is 7th term from the beginning, 7th term from start. And what is T7? T7 is actually T6 plus 1, hence 10C6 into 2 to the power, so 10 minus 6 actually is 4, so which is 2 to the power 4 by 3 into 2 to the power minus 6, okay, into this 3 to the power 6 by 3, which is minus 2, so 3 to the power minus 2. Okay, they're saying that the ratio of this one, that's what I have to figure out. So I have both the terms here, right? So from what topics questions of binomial are asked in JEE mains and advanced mainly? Aman, it's a very generalized question, but if I put it up particularly, these coefficient problems are very popular in JEE main. Number of terms problems are very popular in JEE main. Finding out the remainder
is kind of questions are very popular in JEE main. The binomial expansion, the coefficient, the series involving coefficient are very popular in JEE main. Right? So these are some very, very important concepts. When it comes to the advanced, they club the concepts. Not the purely binomial is rare. So for advanced, purely binomial will be like when you are dealing with 3 or 4 binomial coefficient, 3 different type of binomial coefficient in a series. Right? That kind of expansion, or the negative integral index kind of expansion questions. Something like that. Those are the tricky ones. Or some of the remainder problems very nicely put up. Very nicely put up these remainder problems. In fact, some of the coefficient questions have also become the part of advanced one. Believe me, it has happened in the past. So you see the drill or the spread of the concepts, okay? Alright, which chapter has most weightage in the maths? ये बहुत the different type of question है, Mr. Copium Danger. It's really not a nice question which I would like to answer. ऐसा कोई बहुत weightage नहीं है बेटा किसी एक certain chapter का, लेकिन हाँ अगर generalized version में बोलोगे तो I'll say that कि 3D vector, differential integral calculus or matrices determinant, probability PNC, these are like very, very superbly weighted topics, right? I've just named a few, okay? But there are many more analysis that we have given on our platform. You can easily see that. You'll get a better idea. Okay, means question will not be straightforward. No, Aman, no, never. Straightforward question in advance is rare. I'll not say that it's never asked. No, it has been asked, but rare. And if it is a straightforward question purely from binomial, it will be a complicated term of binomial coefficients involving that or some expansion related something. Okay, that's what it will be back. So we have to get the ratio of these two. So what will be the ratio of these two? मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ, है ना? So we'll get this as 2 to the power. So this one numerator becomes, so I'm writing for T5 by T7. That will become 10C4 into 2 to the power minus 2 into 3 to the power minus 4 by 3 whole divided by 10C6 into 2 to the power 4 by 3 minus 6 into 3 to the power minus 2. So we'll get this 2 to the power 4 by 3 minus 6 into 3 to the power minus 2. 10C4, 10C6 is gone. You just club it up further here. So T5 by T7 when you club it further. So there we're gonna get this as 2 to the power minus 2 into 3 to the power minus 4 by 3 divide by, here we'll be getting 2 to the power 4 by 3 minus 6 and into 3 to the power, what am I gonna get here? This is actually minus 2. Okay, थोड़ा rearrange कर देते हैं क्योंकि देखो ऑप्शन में मुझे 4, 36 ये सब कुछ दिख रहा था है ना, तो उसको क्लब करने की कोशिश करते हैं उसको, whatever that we can at max. So that's gonna look to me as nothing but 3 to the power minus 4 by 3 and 3 to the power minus 2. So let's take it up over there. So 2 to the power minus 2 plus 6 minus 4 by 3 plus 6 minus 4 by 3 into 3 to the power minus 4 by 3 plus 2. तो पहले rearrange करके लिख देता हूँ इसको, है ना. So this will become actually 2 to the power 4 minus 4 by 3 into 3 to the power, so 6 minus 2, 2 by 3. That's going to look to me as nothing but 4 into 1 by 3. So 4 into 2 by 3, that is 8 by 3. 2 to the power 8 by 3 into 3 to the power 2 by 3. ठीक है, अब अगर अपना ऑप्शन देखो तो 2 to the power 8 by 3 into 3 to the power 2 by 3. Okay, alright, so 3 into 2, 6. So that is actually 2 square into 3 to the power, 3 into 2 to the power 2 by 3. Which is gonna be 4 into 6 to the power 3 by 3, that is 36 to the power 1 by 3. Got it. 4 into 36 to the power 1 by 3 is to 1. Done. जो ऑप्शन पूछ रहा है, अब देखो इसमें एडजस्टमेंट है. Somebody might say सर आप तो वैसे ही छोड़ सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? Just because my question is asking. मुझे क्या मिला था? 2 to the power 8 by 3 into 3 to the power, we was getting this as 2 by 3. उसको rearrange किया, so we got to this by 1. ओके, तो जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसा आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा. चलो अगले क्वेश्चन पे जाएं. पक्का स्ट्रेट. ओके, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स. अब देखो ये भी बड़ा पॉपुलर होता है पर ये मेन टाइप की चीज है. द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एग्जैक्टली 33, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज. शुरू करते हैं. यहाँ ऑप्शन दिए 128, 248, 256, 264. क्वेश्चन करो. सर हाउ टू मेक पीएनसी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग? इट्स क्वाइट स्ट्रगलिंग. Manishka. So Manishka Anupriya, how to make PNC probability strong? It's quite struggling. Okay. The people who struggle in PNC and probability,
Generally, I have observed that they do not master PNC and then move on to probability. They do PNC like a little bit and then they immediately try to jump to probability and want to reach to the answer somehow. Right, but it's not possible, right? If you really want to master the entire topic of probability with great confidence, you have to master PNC beforehand. Alright, and that is the reason why we have put it up in that way, that you have to focus on this particular chunk. Okay, so my only take is master PNC. Now you'll ask me, sir, how shall I master PNC? Okay, there's only one thing. PNC for the JEE Main or Advanced has a limited scope of concept. Limited scope of concepts. Believe me, when I say limited, it is limited. It is long, but even then it's limited. It's not unlimited. There are no infinite concepts. Alright, of course you can make infinite questions. That's a different thing, but concepts are limited. Master them. Each and every concept solve 3 and 4 problem. Okay, and the better understanding of PNC and probability occurs only when you solve that chapter twice, thrice. So at least 3 revisions. Believe me, if you really want to master it up to a great level, minimum 3 revisions. Minimum 3 revisions. It's a must required. Okay? So when it comes to make cases, we get absolutely no clue what the question actually demands. For that, you just have to learn in a very simple way. Don't pre-assume anything. In what happened in PNC, we try to think very intelligently every time. No. You know the basics, right? You know the logic, you know the counting thing. Just first of all split the cases. Then think logically. Then connect the absorb. Right? First make the cases. Alright? Just split the question. Slowly, part by part. Do not jump immediately to the final conclusion if you are not able to reach to that. Okay? But expose yourself to more and more number of problems. Revise at least thrice. Manishka, if you really wanna cover it, okay? Hello Priya, believe me, you just have to solve 3 times. The same question also might happen 3 times. But when I say 3 times, like do everything. Then again do everything. Then again do everything. Not just one question 3 times. No, that doesn't help. That doesn't help. And that to also do this activity at a gap of around 1 week. First revision, 2-3 days gap or 3-4 days gap. Second revision, 3-4 days gap. Third revision. After that, believe me, you're gonna master it. You're gonna master it. Okay, alright, let's come back to this question. The general term. That is NCR. Okay, so this is NCR into 3 to the power n minus r by 2 into 5 to the power r by 8. Okay, so from here, if I want the term to be integers, so I have 3 to the power n minus r by 2, so n by 2 minus r by 2 into 5 to the power r by 8. And this term, see, NCR is surely an integer, right? This particular term, NCR, is always an integer, yes or no? In fact, it's a natural number, dude. So you have to focus on this. If this has to become integer, then r by 2 has to be what? Integer. And here, from here, r by 8 has to be integer. R by 2 has to be an integer, r by 8 has to be integer. What does that imply? For r by 8 to be integer, right? For r by 8 to be integer, it will happen only when r is equal to 0, 8, 16, 24 and so on. You have to keep counting it, right? See, n by 2 also has to be an integer. N by 2 will be an integer when n is what? An even integer. So I have to make sure that my answer that I'm going to report, it has to be even for obvious reasons. Now look for this thing. What are the possibilities for r? 0, 8, 16, 24 and so on. How many? I have to create 33 terms. So what is the 33rd term? That will give you what? The least value m. So the least value of n, will be what? 33rd term of this series. That will become is equal to 0 plus 8 into n minus 1. Sorry, not this in that way. 8 into 33 minus 1. You need the 33rd term, right? Because in total you want this what? 33. Exactly 33. When does that exactly 33 will happen? When r can be counted for 33 times. That is the number of possible values of r should be what? 33. So I what do I need? That r, the last value of r, that will be the 33rd term of that series. That will become is equal to what? Nothing but simply 8 into 32. So which is 8 to 6, 256. Perfect. That's it. Done. Which option? C option is the correct answer. As smooth as it looks. Alright. People are getting this?
Chat is, there is no activity in chat. Why the people are not responding quickly? Okay, perfect. Very fast. Yeah, okay. But what's your name? Nitil. Nitil, do you get that? Whatever that I've taught you here. Did you understood? Nitil, did you understood? If that's your name, Nitil or Niti, I'm not sure. If Nitil is a name, then am I pronouncing it correctly? Then did you really understand what I have taught you here? How does it go? Alright? Perfect? Sure? Everyone? Okay. Let's quickly go. See, this is the first session, right? Very fast. Okay. You find it very fast? Let me go it in that way. Did you understood the general term, beta? NCR 3 to the power n by 2 minus r by 2 and 5 to the power r by 8. It will become integer. Every term will become integer when this exponent r by 8 is an integer and r by 2 is an integer. R by 2 will become integer when r is even. But r by 8 will become integer only when r is a multiple of 8. So effectively r has to be multiple of 8. Okay, and n has to be even. Is that okay? When r has to be a multiple of 8, that could be 0, 8, 16, 24 and so on. But how many such number of integers I want? 33. I want these r values, the number of possible values of r to be 33 terms. Then, if I want the least value of n, then the last term should end at that 33rd term. That's it. So, the 33rd term of that expansion, 0, 8, 16, 24 and so on, will become the least value of n. And from that AP, I have already got that. I hope, Nitil, you got that idea, and I'm sure the picture is clear. Okay? Let's go for the middle term now. Very, very simple concept. Very simple concept. We'll keep it simple. If things are simple, we will keep it simple. Okay, concepts है, so I'm gonna go a bit faster here, क्योंकि सब पता है आपको. N even है, so number of terms क्या होंगे? Odd. If n is even, the number of terms will become odd. Then n by 2 plus 1 a term. If the number of terms are odd, we'll have only one middle term, which is n by 2 plus 1 a term. When n is odd, then the number of terms will become even. When n is odd, number of terms will become even. We'll have two middle terms, right? That is n plus 1 by 2 a term and n plus 3 by 2 a term. Okay? Alright? Sure? Got the picture? Lovely. Okay. Now, maximum value of NCR. See, I'll show you this picture. For n equal to 3, 2, 3, 4, I'm just showing you. See, when n is even, we got only one middle term. Because when n is even, number of terms will be odd. 2 plus 1, 3. So I'll got only one middle term. Okay? Or maximum value of binomial coefficient, if I put it up in that way. N equal to 3, I'll get two of them. 3c1, 3c2. And see, clearly both of them are equal. For n equal to 4, we'll get 5 number of terms. There will be two middle term. Sorry, one middle term, that is 4c2. Only one middle term. For n equal to 5, number of terms will be 6. Hence, two middle terms, which is 5c2 and 5c3. Okay? Is this sorted? Chalo, बढ़ते हैं आगे. So maximum value of NCR is maximum. So the value of NCR is maximum. Okay? When? Depends upon the case of n actually. So when n is even, then r equal to n by 2, if n is even. And r is equal to n minus 1 by 2 or n plus 1 by 2. They are the same values if n is odd. Okay? Sure? Done? Perfect. Let's go. This question. The sum of real values of x for which the middle term in the binomial expansion equal 5, 6, 7, 0. Okay, let's pick up the middle term. What is the index? So n equal to 8. This implies that number of terms equal to what? 8 plus 1 or 9. We'll have only one middle term. So what is the middle term? So clearly my middle term will become actually nothing but n by 2 plus 1th term. What is n? 8. So 8 by 2 plus 1th term, which is actually 5th term. So I am looking for T5. T5 is actually T4 plus 1. And what is the expansion? This one. Write it quickly. So T4 plus 1 is going to be x cubed by 3 to the... Okay, so let me put it up in that way. 8C4 into x cubed by 3 to the power 8 minus 4 into 3 by x to the power 4. Nice. This looks very simple. So 3 to the power 4, 3 to the power 4 is gone. X to the power 3 to the power 4 upon x to the power 4. So if I rearrange it, my T5 gonna look to me as 8C4 into x to the power 2 into 4, which is x to the power 8 actually. Okay, so we get 8C4 into x to the power 8. Alright, see, it will be actually, after simplification only I'm telling you.
but this value they have given me as 5670. Taking it to the next page. So what do I have with me? 8c4 into x to the power 8. The value is given as 5670. Very simple calculation. Very simple. Just wanted to make you comfortable with this calculation, this formula. That's why I've given this question. Just for simple practice. It's the first session, dude. It has to be simple. Okay. All right. What is 8c4? 8c4 is, okay. Let me write in the most basic format. 8765. Fair enough. Upon 4321. Okay. All right. So 4, 2, 8, 3, we get this 3 into x to the power 8 is equal to 5670. Fair enough. Okay. So how shall I solve it further? Okay. Now let's look for this thing. So we get this 7, 3 is 21 and this 5 and also let's simplify even further as much as we can. Okay. So 5670, I'll see it over here. So 7 and 535, so 70. Okay, so it's actually, I should put them something like this. 7, 5 is 35, 35 and 3, that's actually, so this is gonna be, it's actually not 3, this is 2. So this is gonna be 70. So 70 and 5670, 7, 8, 5, 6, 81. Oh, we got this x to the power 81. Sorry, 8 is equal to 81, which is 3 to the power 4. That implies x is equal to, or rather x to the power 8 is equal to 3 to the power 4, or let me put it up in that way. They are asking for the sum of all real values. Okay, so for real values I can say that x square will become is equal to 3, which implies x will become is equal to plus minus root 3. The sum will become plus root 3 and minus root 3. The sum will become equal to 0. What is the sum of roots of that equation? 0. Got it? Clear? Very very smooth picture. Alright people, chat में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, क्या हो रहा है? समझ में आया कि नहीं? छोटू सा कैलकुलेशन था, उसमें और कुछ है नहीं. 100 maths question per day is enough average sir. Agrim. It's a very good number. 100 maths question per day is a very good number. If you can do it, believe me. If you can do it, it's a good number. It's a pretty good number. Alright, why I say this? Because you have to study other subjects also, right? You are supposed to study physics and chemistry also on the same day. So make sure that you are attempting good number of questions from them as well, okay? Alright, that's why I'm saying this. It's a good number. Let's finally, so today the last concept of the day, independent term. See, it's all basic one only, right? That's why I'm taking up the term which is independent of that, okay? It's a beautiful question. It's a beautiful question. The term free from variable is called independent term. So I just have to look for the independent term only. Okay, last question of the day, but you have to solve it with me. It's a beautiful question. Again, very nice question. Question says, let alpha positive, beta positive, B says that alpha cube plus beta square equal to 4. Okay, if the maximum value of the term independent of x in the binomial expansion is 10k, so I need the term independent of x in this expansion, and that I have to equate to 10k. What is the value for k? Let's go. So when I write the general term, so tr plus 1, see, when you write for that term independent of it, or you look for coefficient and all in binomial, you first of all write that to a straightforward factor that you write the general term. Okay, is there shortcut to that? Shortcut to what, beta? Shortcut to what? To what actually? Manishka, clear a question, I'm not able to understand. In the meanwhile, I'll write the general term, okay? So that will be 10cr into alpha x to the power 1 by 9 to the power 10 minus r into beta x to the power 1 by 6 to the power r. Let's club the powers of x because I have to make it independent of x. Okay, so this is 10cr, alpha to the power 10 minus r, beta to the power r, x to the power 10 minus r by 9 plus r by 6. Okay, alright. Term independent shortcut formula. See, there is no shortcut formula for all this, beta. This is something that the shortcut itself is this, that you write the general term, get the exponent of x and then make it 0. That's the only shortcut is there, okay? Alright. For some certain problem the shortcuts are there, but not for all of them, and that's why we don't give you as a general rule or something, okay? But for some certain question it may happen, which I will surely involve in some of the upcoming sessions, okay? Alright, so this value has to become equal to 10k. Anyway, so first of all I have to make this particular term independent of, so this exponent I have to make 0. Okay, so since I am looking for the term independent, right, for the term independent of x,
I have to make this 10 minus r by 9 plus r by 6 is equal to 0. Okay, alright. So let's quickly do that. How am I going to do that? Let's quickly see. So we can write this as 20 minus 2r plus 3r equal to 0, or we get simply r is equal to 20. Okay, I've just multiplied by this 18 into the entire equation. So we got this. Sorry, 18 did I multiply? My bad. This has to be 180. So 180 minus, sorry, sorry, it actually has to be 20. 20 minus 2r plus 3r equal to r equal to 20 itself. Let's go for the, now for r equal to 20, let's see what the term is. Okay, wow, come on. My bad, my bad. Let me arrange the data first of all. What is it saying? It's actually 10 minus r by 9 plus 6. So if I multiply by 18, that has to be 220 minus 2r plus 3r. So r equal to 20, that's not possible. The r equal to 10 itself. Let me quickly check that. If the maximum value of the term independent of x in the binomial expansion, I think I have written something 10 minus r by 9 plus r by 6. So x to the power 1 by 6 to the power r, and this 10 minus r by 9 looks all similar only. Let me see what I last question. Let's do that. All the mistakes. Yes, 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 they do. Believe me. No. Okay, they do, they of course do. Okay, so what I was doing, let's say if I take up the LCM as 18, so 9 to 20 minus 2r, and then 6, 3. There is something which is, looks to be missing only. 18, 22r, 3r plus r. I think I have written, I need to check the expression here. The question expression, what it says, alpha cube plus beta square is equal to 4. Then 10 minus r by 9. So n minus r x alpha to the power 10 minus r, and x to the power 1 by 9, 10 minus r. So not sure why this one is not working out. R by 9, R by 6 equal to 0. So 10 by, if I put it up in that way, I just, give me a minute, okay? Give me a minute. So, that's why this pen is not working properly. So 10 by 9 is equal to r by 9 minus r by 6. Okay. I don't think that's gonna work out. Expansion, I need to check it out. Alpha x to the power 1 by 9, beta x to the power 1 by 6. Looks all simple only, or smooth itself. Independent of x, binomial expansion. So 10 minus r by 9 plus r by 6. I think the expansion is something that they have missed out. How to increase question solving. Okay, again I'll come back to that. Just leave it. Sir, मैं आज स्कूल में हूँ. That's एक अच्छी बात है. पढ़ाई करो फिर स्कूल में. Okay. 10 minus r by 9, r by 6. What exactly is happening here? Still thinking. If I put r equal to, let's say 6 or something, or even 9, r can go from 0 to 10 itself, not more than that. So 10 by r plus 9 by 6 or something. This looks really, really different. Okay, okay. Alpha cube b square, the value of this one, which is, we get this alpha to the power 6, r equal to 4. 4 by 9 minus 4 by, okay. 4, 6 by 9, 10 minus 6 by 9, which is actually 2 by 3 plus 2 by 3. I think this question has some calculation, something is missing. Okay, looks like, I'm not really sure although, but it looks like there has to be this as minus 1 by 6. So this one, if this becomes minus r by 6, right, then it will become here
1 minute, okay? I'm just quickly checking that whether it fits or not. So 5r equal to 20, r equal to 4. Yeah, looks good. I think the question printing error is there. It should be x to the power minus 1 by 6. Hello Shubham. Hello Shubham Khandilwal. Hello. Hi Shubham. Okay, alright. Hello Agrim. So this printing error is there. It should be x to the power minus 1 by 6. So this value will give me r equal to 4 now. Okay, now this looks good. This looks good. Hi Shivam. Okay, so when r equal to 4, then it will become actually 10c4 into alpha to the power 6 beta to the power 4. I hope now this looks fine. This will be my coefficient. Okay, so this is actually the term independent of x. Okay, so I'm taking it to the next page. Okay, so 10c4 into alpha to the power 6 into beta to the power 4, and that is equal to 10k. Okay, anyway, it says that the maximum value is equal to 10k, so I'll equate it afterwards. Okay, I'll equate it afterwards. First of all, I know that 10c4 is a finite number, right? I don't have to modify much into that. Okay, so we'll adjust it afterwards. Let's figure it out about this one, because alpha positive, beta positive. Now the question becomes interesting. Alpha cube plus beta square equal to 4. Their addition is given as 4. That to alpha cube and beta square. Product is saying that alpha power 6 beta power 4. Sir, all are saying maths will be in Jan. अरे फहीम मत परेशान हो बेटा, उस पे तुम छोड़ो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो. इस क्वेश्चन में यहाँ पर -1 by 6 होना चाहिए था, प्रिंटिंग एरर है, तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ से we get this. I need the max value of this one. So basically alpha raised to 6 into beta to the power 4 has to be less than or equal to something. Product something addition. Okay, what do you want to do? AM greater than or equal to GM. What do you want to use? Alpha cube. But you want alpha power 6. So if I have alpha cube and I want to reach to alpha power 6, that is I need alpha cube and alpha cube. So why not I write this alpha cube by 2 plus alpha cube by 2. I need beta power 4, so I'll be write this as beta square by 2 plus beta square by 2 by 4 greater than or equal to their product, which is actually alpha to the power 6 beta to the power 4 upon 2 to the power 4 to the power 1 by 4. Nice. Okay, all right. Now this numerator is 4, right? This numerator is 4, denominator is 4, so this entire thing is actually equal to 1. The left hand side, I should change my color actually. So this entire thing left hand side is actually 1. 1 is greater than or equal to alpha raised to 6 into beta raised to 4 upon 2 actually, right? In fact 2 to the power 4, so this will become 16 if I made it equivalent. 1, oh no, this has to be there, 1 minute. My bad, this sometimes happens, it's okay, okay, don't worry much about it. This is the last question that I was talking about. This is here. Okay, so let me go to the next one. Yes, so 1, oh, this gave you the answer. It happens. Okay, so 1 greater than or equal to this upon 2 to the power 4, which is actually 16. So basically I got this alpha raised to 6 into beta to the power 4 as less than or equal to 16 actually, and in my multiplication this has to be, so basically the maximum value, if I multiply 10c4 on both sides, 10c4 into this and here also 10c4, so what is the max value of this one? The max value becomes actually 16 into 10c4 is equal to 10k. Okay, so you just have to do the comparison now. 10 मैंने अपना adjust कर लो यहाँ पर, तो 16 इसको लिखता हूँ मैं 10 9 8 7 divide over, it's like 4 3 2 1, so 4 2s are 8, 3 3 here equal to 10k, k and sorry not k, 10 and 10 is also I have adjusted, so that's gonna give me 7 3s 16 7s are, it's actually 112 into 3 is equal to k. So that is k equal to 336. Perfect. That's what we get. P option is the correct answer. Alright, so how did you apply AM greater than GM there? Difference between numerically greatest term and greatest binomial term. Okay, I'll come to that. Don't worry about it. Sir, all I say that's a different thing. I'll come back to this question again. So I have to look for the maximum value of alpha raised to 6 into beta to the power 4. Please make a correction. This is beta x to the power minus 1 by 6. Okay, please make a correction. This is minus 1. Now this value, this is a product, right? This product I can create with the help of this addition. So I have chosen 4 terms, alpha cube by 2, alpha cube by 2, beta square by 2, beta square by 2. 4 terms.
Why am I applying m greater than gm on them? Because when I add them, alpha cube by 2 plus beta square by 2 plus beta square by 2, that is actually nothing but this expression only, alpha cube plus beta square, which is already with me. So I've just smartly applied that m greater than or equal to gm. Okay, once you do that and you take up the maximum value of that particular term, so k value turned out to be 336. Okay, all right. Perfect. So who's this? Kunal Shivankarji, thank you. Okay, all right. But how? What does that mean? So this, see, the product is there. Okay, the sum divided by 4 greater than or equal to their product, which is alpha cube by 2 into alpha cube by 2 into beta square by 2 into beta square by 2 to the power 1 by 4. Now this sum numerator is actually 4. 4 divided by 4 is 1. So 1 greater than or equal to, you understood this? Numerator is what? Alpha cube plus beta square, which is 4. 4 by 4, 1. So the entire thing is actually 1. So this is effectively 1 greater than or equal to alpha to the power 6, beta to the power 4 by 16 to the power 1 upon 4. And that's why I said that alpha to the power 6, beta to the power 4 is less than or equal to 16. Okay, Anupriya, is this clear now? Okay. Perfect. With this, I am signing off, and I hope that people have actually got a beautiful picture around it. Okay, and the last question was really a nice one, AMGM application basic inequality, but a beautiful observation of the inequality. There was a simple correction was there in the question, which I have done immediately, but I hope that the idea behind the problem is clear. Okay, with this I am signing off. Make sure that you people are learning a lot. For this chapter to master, stay tuned, because the upcoming session I'll be deep diving into the remainder problems, the fractional problems, and then the number of integral problems, and the binomial coefficient, their series, integral index, fractional index, everything. So if this chapter scares you, stay tuned. Come every time to this particular class. I promise you, jitna yahan padhaunga, you'll never ever make any mistake in that. Okay, with this I'm signing off. Take a very good care of your health. Alright, goodbye.